First up, viewers, we have some big breaking news coming in. Like I was mentioning just before we started off, that the gloves are off in the Indy bloc. It's Rahul Gandhi this time around launching back-to-back attacks on Arvind Kejriwal. He has compared Arvind Kejriwal to PM Modi, saying that both of them make false promises. And he also added that it is Kejriwal who doesn't speak about important issues such as the Adani issue, and he also said that Arvind Kejriwal has never spoken anything about inflation. Kejriwal is silent on the Adani issue. Kejriwal could not end corruption, which was essentially the main reason behind the inception of the Aam Aadmi Party under the banner of India Against Corruption. And he also said that Kejriwal and PM Modi make false promises to the people. जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है, वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए, जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, चौकीदार चोर है। नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो, मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। Well, Riyanka is joining me live from the national capital. Riyanka, very good morning to you. Rahul Gandhi has now launched a direct attack on Arvind Kejriwal ahead of the Delhi Assembly elections. How do you see this panning out? See, ahead of the elections, it is very, very clear that there is this rift that is going to be continuing in the India alliance between the Congress and the Aam Aadmi Party, because they want to independently fight the elections in the national capital. We know that how it is very, very important for the Congress to come back to power and retain the seat which they used to have earlier during the time when Sheila Dikshit was the chief minister of the national capital. But it is very, very important for the Aam Aadmi Party as well to continue to be, on the chair of the chief minister. Now, there is a very clear rift happening. Rahul Gandhi had, in fact, gone ahead and attacked Arvind Kejriwal, saying that he promised to make the Delhi pollution free, but there is so much pollution in the national capital. He's just made promises and has not fulfilled them. In fact, Rahul Gandhi has drawn a parallel between the BJP and the Aam Aadmi Party, saying that both of these parties do not want to pass the caste census. They are against the Dalit, they are against the poor. And the Congress leader Rahul Gandhi also coming up and saying that if the Congress comes back to power in the national capital, they will be bringing
back the caste census. On the other hand, there is also a response from Arvind Kejriwal regarding the same. Another Indie partner, Arvind Kejriwal, who is very close to Rahul Gandhi when we saw for the Lok Sabha elections, he says that I will not be commenting on the statements that Rahul Gandhi has passed. He has abused me. Arvind Kejriwal playing quite diplomatically. He is saying I'm not going to comment. Rahul Gandhi's job is to save the Congress and my job is to save the country. This is the version of Arvind Kejriwal. So it is quite diplomatic that Kejriwal has played, and we have to wait and see what happens next, given the elections in Delhi are round the corner. The fireworks are quite high, be it the BJP, Congress and the Aam Aadmi Party, a triangular competition coming forward. Right, Riyanka, here Rahul Gandhi once again attacking Arvind Kejriwal has once again invoked caste census. You know, this is something that Rahul Gandhi has been batting for but hasn't found support from the Indie constituents, and once again he has said that Arvind Kejriwal doesn't agree with the Congress or side with the Congress when it's taking on the central government, be it on caste census or even the Adani issue. Arvind Kejriwal is always absent, and meanwhile Arvind Kejriwal, like you mentioned, has said that Rahul Gandhi's fight is not to save the country but to save the Congress party. Well, absolutely. That is indeed the situation that has panned out when I talk about a very clear divide between the Indie partners, Aam Aadmi Party and the Congress, where Rahul Gandhi continues to maintain that the Aam Aadmi Party, along with the BJP, does not want to go ahead and talk about the caste census, something that Rahul Gandhi has very openly said in the parliament, as he mentions. And he also goes ahead and says that the BJP and the Aam Aadmi Party both are against the Dalits, against the tribals, and they do not want to give them their rights. And he says that Kejriwal has not given the support to the Congress party, even when there were campaigns for caste census during the Lok Sabha elections against the BJP government to corner them together. In fact, we are also seeing Kejriwal's diplomatic comment coming out that I'm not going to comment on what Rahul Gandhi has abused me. Rather, Rahul Gandhi's work is to save the Congress, not India, but my work is to save the country. So yes, several of this war of words are underway. As of now, we are going to see much more firework as and when the days come in closer for the elections in the national capital. But for now, Rahul Gandhi launching a scathing attack on Arvind Kejriwal regarding the same. Riyanka, stay on with me because in just a few moments from now, we'll also play out the BJP reaction. But first, let's also listen into what Rahul Gandhi said against Arvind Kejriwal. आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी. आपको याद है, वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा. अब देखिए हुआ क्या. आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है. और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे. अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया. तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है. कोई फर्क नहीं है. जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले. आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं. मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं. मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, चौकीदार चोर है. नरेंद्र मोदी जी बैठे थे,
मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है, मीडिया वाले नहीं जानते, मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। Well, that was the latest reaction of Rahul Gandhi mounting his attack on Arvind Kejriwal. But here's a report, viewers, that summarizes the entire AAP versus Congress battle within the India Alliance. Here's the report. Congress leader Rahul Gandhi has launched a scathing attack at Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal. At his first public rally for assembly elections in the national capital, Rahul Gandhi took jibes at Kejriwal over the rising pollution and inflation. ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? Delhi Congress President Devendra Yadav also weighed in on Rahul Gandhi's opinion. आपने केजरीवाल जी को पिछले 11 साल काम करते देखा, आपने मोदी जी को पिछले 11 साल काम करते देखा, और वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते नजर आए। धरातल पर उसके विपरीत आज जिस तरीके की स्थिति बनी है, उसकी चिंता माननीय राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में रखी। मुझे खुशी है। Meanwhile, Congress's Sandeep Dixit has said that it's only the Congress that is standing with the people of the country. राहुल जी ने साफ कर दिया कि दिल्ली के विकास को बिगाड़ने में, दिल्ली के दुश्मन संविधान के खिलाफ कोई खड़ा है तो केजरीवाल और मोदी, और अगर कोई जनता के साथ खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी। में राहुल जी का धन्यवाद करता हूं। In fact, leader of opposition in the parliament Rahul Gandhi did not fall short of attacking the BJP either. He said that the BJP and the AAP are turning away from the caste census and do not want minorities to prosper. जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। While the fight for the national capital inches closer, it remains to be seen who will win the upcoming Delhi polls.